Assalamu alaikum students. Welcome to your next chapter, that is further probability. And let's first take a quick recap of what we've already discussed in probability in book 2. So the first thing that we learned was sample space. So sample space was the collection of all possible outcomes. Whenever there's an event happening, for example, tossing a coin or throwing a die, whenever such an event is happening, a sample space covers all possible outcomes. For example, for tossing a coin, the sample space is head or tail. When you throw a dice, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. I'm talking about a fair dice. Okay, so that is your sample space. All possible outcomes, जो भी आपने काम किया अ, उसका नतीजा क्या हो सकता है. और हमने ये भी पढ़ा था कि probability for an event, that is P is equal P bracket E is equal to favorable outcome over total number of outcomes. For example, if you throw a dice, the probability that a 1 will land will be 1 by 6. Or if you throw a die and the probability that the number will be 5 or 6, that would be 2 over 6, because favorable outcomes are 2, 5 or 6, and total number of outcomes are 6. Then we also talked about that probability can never be less than 0 and can never be more than 1. It's always between the range of 0 and 1. Okay, whenever the probability of an event is 0, that means it is impossible for that event to happen. वो कभी भी नहीं होगा. And whenever the probability is 1, that means that event is certain. वो हो के ही रहेगा. Okay, and lastly, probability of E dash, that means probability of not that event happening. Okay, that is 1 minus the probability of the event happening. इसका क्या मतलब है? Let's say if you throw a die, the probability of it showing a 1 is 1 by 6, and the probability of it showing not a 1, that means the probability of it showing a 2, 3, 4, 5 or 6, that is 5 by 6. Okay, and if you subtract 1 over 6 from 1, the answer is also 5 by 6. तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली बुक में लर्न की थी. इन दिस बुक द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज how to show a sample space in the form of a set. So let's take this worked example on page number 39 of D4. It says the number 2, 3, 5 and 8 are written on 4 cards, and these are placed on a table. Two of these cards are selected at random to form a 2-digit number. Select the sample space and hence find the probability. तो बच्चों 2, 3, 5 and 8, 2, 3, 5 and 8, इस तरह के आपके पास 4 कार्ड्स पड़े हुए हैं और आप लोगों ने दो दो कार्ड्स पकड़ के सैम्पल स्पेस बनानी है. तो आपके पास क्या होगी? द फर्स्ट विल बी, आपने एक कार्ड 2 उठा लिया और दूसरा कार्ड 3 था, और पहला कार्ड 2 उठाया, दूसरा कार्ड 5 था. पहला कार्ड 2 उठाया, दूसरा कार्ड 8 था. सिमिलरली पहला कार्ड आपने 3 उठा लिया, दूसरा कार्ड 2 था, 3 था, 5, 3, 8, and then 5, 2, 5, 3, 5, 8, and lastly पहला कार्ड 8 था, दूसरा 2 था, 8, 3 and 8, 5. दिस इज योर सैम्पल स्पेस. इसके अलावा कोई आउटकम नहीं होगी. अगर आप दो कार्ड्स एट रैंडम उठा रहे हो, दिस इज योर ओनली सैम्पल स्पेस. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. ऑल्सो सेट्स के अंदर हम बाद में भी पढ़ेंगे और आपने पहले भी पढ़ा होगा. वेन एवर यू राइट दिस नोटेशन, दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. सो एन ऑफ एस का मतलब होगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So our total possible outcomes are 12. Okay, so the first question is find the probability that the number formed is odd. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि odd numbers की, ये मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे ऑड नंबर्स लिख रहा हूँ जो कि फॉर्म हो रहे हैं दो कार्ड से. तो वो एक ये है दिस, this, and you have this and this.
So 1 2 3 4 5, there's one more that I'm missing, and 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so this is 23, 25, 35, 53, 83 and 85. So these are all the odd numbers that can be formed. So probability क्या होगी? Probability of odd number will be total possible favorable outcome, that is total number of odd outcomes that can happen, that they are 6, and our sample space is 12. So your answer is 1 by 2. 6 ones are 6 twos are. Okay, now next is divisible by 7. Divisible by 7, for this you first need to calculate how many numbers are divisible by 7. So 23 is not, 25 is not, 28 is, 32 is not, 35 is, this is not, this is not, this is not, not this, I believe not this, not this, not this. So only two numbers. So 2 by 12, and you get 1 by 6. So now we have to find out the prime number. So 23 is a prime number, 53 is a prime number, and 83 is a prime number. So total prime numbers are 3 divided by the total number, which is 12. So we get 1 over 4 after simplification. And the last is probability of not a prime number. So this one's easy. We can just use the formula which we just learned, 1 minus probability of prime, and probability of prime was 1 by 4. So 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. Okay students, now comes the interesting part, and for that you need to learn two definitions. The first is mutually exclusive events, and the second is independent events. Mutually exclusive events are those that cannot happen at the same time. So the prime example would be, if you toss a coin, the coin can either show a head or a tail. It cannot show both at the same time. So head or tail are mutually exclusive. एक होगा दूसरा नहीं होगा. Okay, and the second definition that you have to understand is of independent events. Independent events are events that are, as the name suggests, are not dependent on anything that has already happened. For example, tossing a coin, again heads or tail are independent events. For example, अगर आपने एक बार कॉइन टॉस किया है और आपका हेड आ गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार टॉस करोगे तो हेड आने के ज़्यादा चांसेस हैं. अगली बार भी 0.5 चांस है हेड आएगा या टेल आएगा. सही है. और इसकी डिपेंडेंट इवेंट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, यू आर ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ डेक. तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. अगर आपने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया और वापस प्लेस नहीं किया, तो अब वो अगले इवेंट पिछले वाले पर डिपेंडेंट हो गए हैं. पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 थी और अब 51 हो गई हैं. ओके, सो दीज आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Students, I wouldn't want to make this lecture too long, so let's finish it off with this one last concept, and then the rest we'll discuss in class. So in book 2 we learned that probability of a 6 on a dice is 1 by 6. But what if we are throwing two dice at the same time? What is the probability of getting two sixes on two dice simultaneously? So how can we calculate that? There are two approaches. The first is a possibility diagram and the second is a tree diagram.
So I am going to show you how a tree diagram works. So tree diagram, as the name suggests, पहले मैं first डाइस की ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक ट्री बना रहा हूँ, ये ब्रांचेस बना रहा हूँ उसकी. सो दिस इज आवर फर्स्ट डाई, और उसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं. या तो 1 आएगा उस पर, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है. अब इसको दूसरे डाइस के साथ मैच करने लगे. सो दिस इज़ द ट्री डायग्राम. अच्छा, काफ़ी लंबे हो गए हैं तो मुझे मुश्किल हो जाएगी. ट्री डायग्राम शोज दैट पहले वाले नंबर के ऊपर 1 आया और दूसरे नंबर पे दिस इज द सेकंड डाइस. इन ब्लू आई एम राइटिंग द let's take this blue. So in this blue I am writing the outcomes on the second die. तो पहले नंबर पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, फिर 1 2 3 4 5. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसमें से देखें हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं. हमारे पास एक आउटकम है, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है. सो 1 1 इज़ अ पॉसिबल आउटकम, 1 2 इज़ अ पॉसिबल आउटकम, 1 3 is a possible outcome, 1 4 up to 1 6, and then you have 2 1 2 2. These are all possible outcomes. So अगर आप देखते हैं eventually you will have 6 and 6. तो total possible outcomes आपके पास 36 हैं. Okay, and the probability, so the formula for probability was total favorable outcomes over total possible outcomes. So total possible outcomes आपके पास 36 हैं. फेवरेबल आउटकम कौन सी है, आपको कौन सी वाली चाहिए. एक पे 6 आए, दूसरे पे भी 6 आए. तो फर्स्ट डाइस पे 6 इस ब्रांच के ऊपर आ रहा है, और सेकंड डाइस पे यहाँ पे 6 आ रहा है. सो देर इज जस्ट वन outcome that has 6 and 6, and all other, and there are total of 36 outcomes. So बच्चों, this is a tree diagram which will be used to solve these complex questions. Let's end it here. आप लोग ये वीडियो होपफुली आज 12 जैन को ही देखेंगे अपनी क्लास टाइम्स में, और if there are any questions we'll discuss them later and we'll build on from here. Thank you so much for watching.